मत करना भी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म द न्यू लाइसियम फॉर इंग्लिश लिटरेचर पर। डॉक्टर जेके तिवारी हियर फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर क्वेरीज, फॉर योर सजेशंस। जी सभी को शाम वाली नमस्ते, शाम वाली गुड मॉर्निंग सभी को जय श्री राम है। बता दीजिएगा एक बार, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी कंफर्म करिएगा बिफोर वी शैल स्टार्ट। राइट जी, रंजना मौर्य, रमेश यादव, भावना जी, ज्योति कनौजिया, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सब बिल्कुल मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास, चकाचक। ऑडिबिलिटी कंफर्म करिएगा हैंड्स अप करके, फिर हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर सेशन को। बट बिफोर आई स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर सेशन, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन शेयर। पहले शेयर कर लीजिए, एंड बिफोर यू शेयर योर क्वेरी, योर क्वेश्चंस, शेयर योर चैनल अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड अमंग्स अदर ग्रुप्स। सब पर चेक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने चैनल को फटाफट। फिर हम शुरू करते हैं आपके इस क्लास को, आपके इस क्वेश्चन आंसर सेक्शन को। दो सभी को नोटिफिकेशन मिल जाता है जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, जिन्होंने भी बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है कुछ मदद उनकी कर दिया करिए। चलिए, सब कुछ ठीक है जी। सपना जी को नमस्ते, सत्येंद्र कुमार जी को नमस्ते, रिंकी को भी नमस्ते। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को इस उम्मीद के साथ कि यू डू नॉट हैव एनी डाउट। राइट, यू आर डाउटलेस, यू आर एरर फ्री, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 is going to come on your screen and this is the first question. First question is from literary terms. जी बुशरा जी, good evening. First question is from literary terms, and the first question is sprung rhythm is an example of. Sprung rhythm is an example of verse, meter, rhyme or rhythm. जी रजनी, आपको भी गुड इवनिंग। चैनल शेयर कर दिया है तो क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। पहला क्वेश्चन ही है, sprung rhythm is an example of. And you know that the originator of sprung rhythm was who? Gerald Manley Hopkins. He was the originator of sprung rhythm, right? He was the originator of sprung rhythm, and he said that sprung rhythm is very close to natural speech. Natural speech के बहुत क्लोजर होती है, और ये किसका एग्जाम्पल है? राइट सारिका, गुड इवनिंग। पहले ही क्वेश्चन में फंस गए क्या? वर्स का एग्जाम्पल है कि मीटर का एग्जाम्पल है कि राइम का एग्जाम्पल है कि रिदम का एग्जाम्पल है? यस, शिबू जी को भी प्रणाम, नमस्ते। स्वाति चौधरी, भावना, सारिका, रमेश, एम बाटगर, भावना, हुड्डा ताहिर,
कमिलिनी बारिक, ज्ञानेंद्र साहू, शिबू पांडे, स्वाति चौधरी. Very nice. Right answer to the question number 1. First question is not as much tough yaar. It's very easy. Do not take tension. Just try to understand the question and then answer. समझिए क्वेश्चन को और फिर आंसर करिए. It's not as much tough. उतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो. It's very simple. Sprung rhythm is an example of. किसका एग्जाम्पल है ये? चलिए, सबने आंसर दे दिया है जितने भी लोग जुड़ चुके हैं जी. आरती, निषाद, बुशरा, सारिका, सबका आंसर आ गया है. बट देयर इज अ बट. पहला ही क्वेश्चन सबका गलत हो गया है. सबका गलत हो गया है. जितने भी आंसर्स अभी तक आए हैं, चाहे वो छोटा आ हो और चाहे बड़ा आ, और वो सबका आंसर गलत है. स्प्रंग रिदम कोई वर्स फॉर्म नहीं है, बट ये मीटर का एग्जाम्पल है. मीटर का एग्जाम्पल है स्प्रंग रिदम, और इसका आंसर बी है जी. एक्सेंचुअल वर्स नहीं, ये एक्सेंट और अनएक्सेंट जो होता है, जिसको आप स्ट्रेस और अनस्ट्रेस कहते हो, वो फुट का एग्जाम्पल, वो मीटर का एग्जाम्पल होता है. और यहां पर जो आंसर है वो आंसर है मीटर का ये एग्जाम्पल है. आंसर इज बी. राइट. देखिए फटाफट आंसर चेंज होके भी आने लगे हैं जी. तो आंसर हमेशा के लिए चेंज करिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का स्प्रंग रिदम का एग्जाम्पल है मीटर, ना कि वर्स. वर्स क्या होता है? वर्स तो पोएटिक फॉर्म है ना. वर्स पोएटिक फॉर्म है कि एलिजी है, सोनेट है, ओड है, लिरिक है, पैलिनोड है. These are the example of verse, right? But when you talk about sprung rhythm, then it is the example of meter. All right? Clear हुआ मामला जी? रीता जी नमस्ते. Clear है ना? If question is clear, then we should proceed. And if still there is any doubt, फिर से बताइए, फिर से मैं बताऊंगा, फिर confirm करिएगा. Then I shall proceed. I am not in a hurry at all. Right, but you should understand each and every question thoroughly, as you are the aspirant of a serious examination. You are aspirant of competitive examination, and everything should be crystal clear in your mind, and only then you could get through the examination. All right, पहला ही रॉन्ग. और अगर पहला, जैसे मैं भी जब एग्जाम देने जाता था ना, अगर पहला वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता था तो फिर बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होते थे. और अगर कहीं पहला वाला सही गया तो बहुत चांसेस होते थे कि अंदर वाले बहुत सारे गलत हो जाएंगे. पहला गलत होना बुरा नहीं है. राइट. पहला गलत होना बुरा नहीं है. हाँ, आज के बाद गलत नहीं होगा, ये अच्छी बात है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Here a few poems are given and you have to tell which 2 poems are written by Lord Tennyson. Which 2 of the following poems are by Lord Tennyson? Lord Tennyson की 2 poems इसमें कौन कौन सी हैं जी? प्रतिभा नमस्ते. Locksley Hall, The Pied Piper of Hamelin, The Lady of Shalott, and 2 in Campagna. Which 2 poems were written by Mr. Alfred Lord Tennyson? Alfred Lord Tennyson की 2 poems इसमें कौन सी हैं? You have to tell the answer. 2 poems written by Alfred Lord Tennyson. शाबाश, अजय मिश्रा जी आ चुके हैं. एंड ही मस्ट बी नोइंग द राइट आंसर as he is an aspirant of PGT. All right, Tennyson की पोएम है Locksley Hall and The Lady of Shalott. A and C is the right answer. Right, A and C is the right answer. फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा,
ये ऑप्शन सी है और फिर नीचे ऑप्शन बी आया है। नीचे ऑप्शन बी आया है ना, ऊपर सी आ गया है, तो इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। ए और सी ये टेनिसन की पोएम है। एंड द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन एंड टू इन द कैम्पाग्ना, ये पोएम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। राइट, टू बी एंड डी वर रिटन बाय ब्राउनिंग एंड ए एंड सी वर रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, more is thy due than more than all can pay is an example of, फिगर ऑफ स्पीच का ये क्वेश्चन है। more is thy due than more than all can pay is an example of, inversion, exemplum, transferred epithet, hyperbolic। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बताइए। जी पूजा, राधे राधे। फिरोज जी को भी गुड इवनिंग। अजय मिश्रा को प्रणाम। राइट, मोर इज दाई ड्यू दैन मोर दैन ऑल कैन पे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? जी कमान कमान, शाबाश। बुशरा, भावना, एम्बेडकर, रीता, प्रतिभा, वेल डन। पूजा, फिरोज, मौसमी, गुड इवनिंग। अजय मिश्रा, धर्मपाल, डन। रमेश यादव, वाओ ग्रेट। मोर इज दाई ड्यू दैन ऑल कैन पे, ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है इन्वर्जन का। इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। व्हाट इज इन्वर्जन? जी नूरी नमस्ते, वापिस इंग्लिश एकेडमी को भी गुड इवनिंग। राइट, व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन किसको कहा जाता है? इन एन इन्वर्जन सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद जहां पर सब्जेक्ट आता है उसी को इन्वर्जन कहा जाता है। वर्ब के बाद जहां सब्जेक्ट आता है उसी को इन्वर्जन कहा जाता है। बेसिकली ये एडवर्ब का क्वेश्चन होता है। राइट, ये ग्रामर में एडवर्ब का पार्ट है जहां पर वर्ब प्रीसीड्स द सब्जेक्ट। वर्ब प्रीसीड्स द सब्जेक्ट। जैसे आप ये सेंटेंस लिखो कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहां पर सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट देयर तो नहीं है ना, सब्जेक्ट है 50 स्टूडेंट्स। And what is the verb? Verb is are. So subject comes after the verb. This is called inversion. Right? This is called inversion, where subject comes after the verb. Right? Subject comes after the verbs. इसको कहते हैं inversion. Interrogative sentences में भी यही होता है जनरली। Do you have a pen? अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई ना, ये, और ये हो गया इन्वर्जन। दूसरा सेंटेंस देखिए, एज यू सो शैल यू रीप। राइट, सो शैल यू रीप। यहां पर यू सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? शैल। राइट, शैल हेल्पिंग वर्ब है और यू बाद में आए हैं। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर है इन्वर्जन। इसी को इन्वर्जन कहा जाता है। मोर इज दाई ड्यू, दाई इज द सब्जेक्ट एंड इज द वर्ब। वर्ब कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट कम्स लेटर। दिस इज कॉल्ड
इन्वर्जन। क्लियर? कोई डाउट जी? नमस्ते विहान जी, क्लियर हुआ? रमेश जी कोई डाउट तो नहीं ना? जी रूबी निशाद जी को भी गुड इवनिंग। इज एवरीथिंग फाइन नाउ? क्लियर? इफ क्लियर देन लेट्स प्रोसीड, and if any doubt then clear your doubt first before you go to the next question. Question number 4. Verse stories dealing with chivalry, knight errantry, enchantments and love are known as. This is the definition of one of the literary forms. Which one? Verse stories dealing with chivalry, knight errantry, enchantment, love, known as. उसको क्या बोलते हैं? Metrical romance, ballad, ode और Palin ode. जी हेमलता जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? राइट, विच वन इज द राइट आंसर? वर्स स्टोरीज डीलिंग विद शिवालरी, नाइट इरांट्री, इंचेंटमेंट्स एंड लव आर नोन एज। जी रमेश यादव, शतेंद्र, जूली, धर्मपाल, रजनी साहू, आरती निषाद, शतेंद्र कुमार, सुबोध कुमार, वेरी गुड। हेमलता उजानिया, शाबाश। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ए। ए इज द आंसर। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांस। स्पेशली मेडिवल रोमांस में नाइट्स हुआ करते थे, इंचेंटमेंट्स मैजिक हुआ करते था, लव हुआ करता था, शिवैलरी हुआ करती थी, ब्रेवरी हुआ करती थी। इन ऑर्डर टू प्लीज द लेडी, उसी को रोमांस कहा जाता था। And this is the example of a metrical romance. What is ballad? Ballad is a tale. Ballad is a tale, especially folk tale. Tale in a verse form. Tale in verse, it is called ballad. And ode are celebratory poems. Odes are celebratory poems and Palin odes are written. किस लिए लिखा जाता है? कोई पोएम आपने पहले लिखी है, बाद में उसको रिग्रेट करना है, आपको वापस लेना है, तो यू राइट अनदर पोएम दैट इज कॉल्ड पैलिन ओड। क्या है डेट है अमृता? क्यों रो रही हो? हाँ, कितनी डेट है आज? हाँ, EMRS की। तो ये आंसर क्लियर हुआ। पैलिन ओड, बैलेड, metrical romance and verse stories dealing with chivalry, knight errantry, enchantment and love are known as metrical romance. Answer is A. Then question number 5. Once again, figure up speech. He is a citizen of no mean city. He is a citizen of no mean city is an example of tautology, periphrasis, liturties or prolepsis. इसका एग्जाम्पल है he is a citizen of no mean city. 16-17 दिसंबर से है, शाबाश, 16-17 दिसंबर से है। और आज की डेट कितनी है? आज है 21, है ना? आज है 21 और एग्जाम की डेट है 16 और 17। कितने दिन आपके पास है? 9 डेज या 10 डेज आपके पास इधर और 15 डेज आपके पास इधर। देयर आर टोटल 25 डेज। एंड
there are not more than 25 writers in your syllabus. राइट, सिलेबस में 25 राइटर से ज्यादा नहीं है, और अगर है भी तो भी कोई फर्क नहीं है. यू शुड नॉट वरी, जस्ट फॉलो मी. आई एम टू nowadays you are having questions based on your EMRS. These are the EMRS special classes. Though questions are equally important for all examinations, but I am taking questions from your syllabus only right now. तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, यहाँ पर आप फोकस करिए. You will get a lot of things. जी तुम्हारा तो UPTGT हो ही जाएगा स्वाति, बस लगे रहिए. UPTGT तो ऐसे चुटकी में होता है. हमारे जितने सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर हमारे साथ बने रहे. UPTGT PGT तो छू मंतर है. EMRS भी बड़ी बात नहीं है, लगने की बात है. अगर आप 25 डेज भी लग गए ना, तो फिर गारंटी मैं ले लूंगा आपकी कि आपका सिलेक्शन करा दूंगा. चलो, ये जो एग्जाम्पल है, ये सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी लाइटर्टीज. राइट, ये लाइटर्टीज का एग्जाम्पल है. एंड इन लाइटर्टीज हम क्या करते हैं, वी यूज नेगेटिव वर्ड्स, वी यूज नेगेटिव फ्रेजेस टू एम्फेसाइज अ पॉजिटिव थिंग. पॉजिटिव को एम्फेसाइज करने के लिए निगेटिव का यूज करते हैं. जैसे हम ये कह दें, अजय मिश्रा इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, इट मीन्स ही इज अ गुड स्टूडेंट. राइट, इसको बोलते हैं लाइटर्टीज. राइट, हाँ, कोई बुक नहीं ली है तो आप लीजिए भी मत, ठीक है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो गूगल पे नहीं है वो हमारे पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ यार, मैं भी रोज सोचता हूं ग्रामर के बारे में, टाइम नहीं लग पा रहा है, बट वेरी सून आऊंगा मैं आपके साथ ग्रामर को लेकर के. लिटरेचर ही इतना बड़ा है कि मैं इसी में उलझ के रह जाता हूं. द वर्ड एनाग्नोरिसिस used by Aristotle does not mean. It means anagnorisis has 3 meanings. And which one is odd one out? Odd one out कौन सा है यहाँ पर? Discovery, recognition, knowledge, tragic flaw. The word anagnorisis used by Aristotle to mean what? Discovery, recognition, knowledge, and tragic flaw. These are the 4 options, and the right answer is what? Right answer is B. Tragic flaw is not anagnorisis. Tragic flaw is hamartia. Tragic flaw is hamartia, not anagnorisis. This is the right answer. Right, the right answer to the question is D. Hamartia. Right? अरे आप जब चाहो तब आ जाओ, मैं कोई इतना अमिताभ बच्चन थोड़े ना हूं कि मुझसे मिलने के लिए आपको स्पेशल आना पड़ेगा. मैं भी नौकरी करता हूं, जहां नौकरी करता हूं वहीं पे आ जाओ, जब चाहो तब मिल जाऊंगा. यार मैं तो सिंपल सा आदमी हूं. Which of the following plays by William Shakespeare is not directly referred to in T.S. Eliot's The Waste Land? T.S. Eliot के वेस्ट लैंड में कौन सा प्ले शेक्सपियर का रेफर्ड नहीं है? Which of the following plays of William Shakespeare is not directly referred to in T.S. Eliot's The Waste Land? Hamlet, King Lear, Coriolanus, or The Tempest? Very good. Which of the following plays by Shakespeare is not referred directly
in T.S. Eliot's Wasteland? G. Julie Gautam, Bhavna, Ramesh, Kamilini Barik, Sarika, Satyendra Kumar, Swati, Firoz. Right answer to the question is B for Bombay. It is King Lear which doesn't find a mention in Shakespeare's The Waste Land. Rest of the three plays are directly mentioned. Rest of the three plays are mentioned. Hamlet is quoted, Coriolanus is quoted, The Tempest is quoted. Only play that is not quoted in The Tempest is Shakespeare's King Lear. So right answer is B here. All right. Next question. गुड इवनिंग अनुपम धुरिया, कैसी हो? बड़े दिन बाद. Who among the following advanced the theory that the mind is a tabula rasa at birth? Mind is a tabula rasa at birth and acquires all ideas by experience. Right? Acquires all ideas by experience. John Locke, John Wesley, Isaac Watts, Dennis Diderot, who propounded the theory of tabula rasa. Tabula rasa means blank slate of mind. And according to the theory, when a baby is born, right, when a baby is born, his mind is totally blank. उसका mind जो होता है कुछ भी नहीं लिखा होता, totally blank होता है. And it is our society that makes its imprints on the mind of the baby. Right? Mind of the baby जो आता है दिमाग में, वो कहां से आता है? वो सोसाइटी से आता है. And this is called tabula rasa. Right? Tabula rasa means a child is blank slate at the time of the birth. It is society which corrupts the baby. Society corrupt करती है, जैसे कि मानना था रूसो का. And tabula rasa का जो concept है, it was given by John Locke. Right? John Locke का ये concept है. All right? Oh, so sorry Anupam, so sorry. May his soul rest in peace. Tabula rasa means blank slate of mind, and the concept was propounded by John Locke. All right? Next question. T.S. Eliot's theory of objective correlative appeared in his essay entitled. बीच बीच में ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में भी. Eliot's theory of objective correlative appeared in his essay entitled Three Vices of Poetry, Tradition and Individual Talent, The Metaphysical Poets, or Hamlet and His Problems. In which essay he gave his theory of objective correlative. शाबाश शे, निशा विहान, सुबोध, जूली, अजय, बुशरा, सोनू, श्रुतिका, धर्मपाल, सपना, रीता, रमेश, स्वाति, भावना, हुडा, नूरी. ऑल राइट, आंसर वेरी सिंपल है. रजनी, जूली, गौतम, Hamlet and his problems. Right? In Hamlet and his problems, he discussed his theory of objective correlative. And what is objective correlative? Objective correlative is a chain of events, a situation
through which the character expresses his emotions. और इसी ग्राउंड पर on the ground of objective correlative T.S. Eliot declared Hamlet as an artistic failure. आर्टिस्टिक फेलियर डिक्लेयर कर दिया था हैमलेट को टी.एस. एलियट ने on the ground of objective correlative. So right answer to the question is D, Hamlet and his problems. Right? एक आंसर आया है किसी का, that is answer C. So he or she, whosoever he is or she is, rectify करिए कि metaphysical poets में he gave the concept of dissociation of sensibility. Dissociation of sensibility and association of sensibility. Sorry, unification of sensibility. These two concepts were propounded in the metaphysical poets, and in tradition and individual talent, he gave his theory of impersonality and his theory of individual talent. He defined tradition, right? ये tradition and individual talent में है. Poetry is not an escape from personality, but an क्या है? Poetry is not the turning loose of an emotion, but an escape from emotion. ये theory of impersonality है T.S. Eliot की. यहीं पर वो आज है कीट्स की तरह कैमिलियन पोएट की बात करते हैं. All right. Next question, that is question number 10. Match the list. Here names of the critics or writers given, and here list second is the list of the texts, and you have to match. Whereas John Dryden, Samuel Daniel and Ben Jonson. Defense of rhyme, timber or discoveries, ars poetica of dramatic poesy. Which option is the correct option? Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 पर है. आप लोग 7 पे कैसे भाई? यू आर रनिंग लेट हुडा, जस्ट प्रेस द बटन. अरे बहुत सारे लोग 7 पे. देखिए, Horace is known for his ars poetica. So A का आंसर थर्ड है, and here in option B and option C you have A3, and then John Dryden wrote of dramatic poesy, an essay on dramatic poesy, so B for fourth, right? And then Samuel Daniel and Ben Jonson. Ben Jonson wrote discoveries. D stands for second. Right answer is C. Ben Jonson 2. Oh, right, sorry. Ben Jonson 2 and D for 2. Yes, answer is C. All right answer is C. एक बार चेक करिएगा. 10th का राइट आंसर सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए ना. A3, B4, C first and D second.
D second, C first, B four, A third. All right. Next question. Question number 11. Which of the following authors wrote Studies in the History of the Renaissance? Studies in the History of Renaissance is a very popular and very important work written by whom? Walter Pater, Oscar Wilde, Thomas Carlyle, or John Ruskin? Which of the following authors wrote Studies in the History of the Renaissance? Walter Pater, Oscar Wilde, Thomas Carlyle, or John Ruskin? This is a work by Walter Pater, and Walter Pater and Oscar Wilde, they were contemporary, and both were the propagator of aesthetic movement in literature. Right? They were the propagator of art for art's sake movement. Walter Pater wrote the book Studies in the History of Renaissance. Sunset and evening star and one clear call for me. Sunset and evening star and one clear call for me. These lines occur in which of the following poems? Idylls of the King, In Memoriam, Crossing the Bar, or Morte d'Arthur? Fully answer. शाबाश. देखिए सबका एक तरफ से सही आंसर है. क्रॉसिंग द बार की लाइन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. A poet once referred to an old man as a tattered coat upon a stick. Old man as a tattered coat upon a stick. That is an example of metonymy, sarcasm, simile, or metaphor. A tattered coat upon a stick. In fact, line W.B. Yeats की poem की है. Old man as a tattered coat upon a stick. Example किसका है ये? Metonymy, sarcasm, simile, or metaphor. Question number 13. शाबाश, फटाफट आंसर करिए, फटाफट. स्वाति का 12 थे नहीं. स्वाति, अजय मिश्रा, सुबोध, शे, निशा, धर्मपाल, सपना, श्रुतिका, रजनी. शाबाश. Old man as a tattered coat upon a stick. ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एग्जाम्पल क्लियर हुआ ना? ये
मेटानमी नहीं है हुडा, ये मेटाफर है, मेटाफर है। ओल्ड मैन को तो टैटर्ड कोट कह रहा है ना, ओल्ड मैन क्या है, टैटर्ड कोट। अब ओल्ड मैन इज टैटर्ड कोट मीन्स ए इज बी, और जहां पर ए इज बी है उसी को कहते हैं मेटाफर। मेटानमी तो एसोसिएशन बताता है, मेटानमी तो रिलेशन बताता है, यहाँ पे रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ओल्ड मैन इज पाल्ट्री थिंग, ओल्ड मैन इज टैटर्ड कोट, और जब ओल्ड मैन टैटर्ड कोट है तो ओल्ड मैन इज ए, टैटर्ड कोट इज बी, ए इज बी, वहीं पे होता है मेटाफर। अब देखिए, आप में से जैसे सपना नहीं, पहले गलती करी थी, तुरंत आंसर चेंज करती है लड़की, राइट। और इसने क्या किया था, क्या समझ लिया था इन्होंने सोचा कि एज है ना, ये सेंटेंस का पार्ट है, एंड ओल्ड मैन एज अ टैटर्ड कोट। अब अगर वो सेंटेंस का पार्ट है तब तो सिमिली है, बट वो सेंटेंस का पार्ट है नहीं, वो सेंटेंस के देखिए बाहर है, यहाँ पे कोट लगा है ना, इन्वर्टेड कॉमास, यहां से शुरू होता है सेंटेंस, और इसलिए यहां पर क्या होगा आंसर, यहां पर आंसर होगा मेटाफर। ऑलराइट, अच्छा मेडिसिन जल्दी खा ली, किस चीज की मेडिसिन भाई, और वो मेडिसिन जो आपके दिमाग को ही अफेक्ट करती है, हाँ? मेडिसिन खाती हो कि पीती हो? पीने वाली भी मेडिसिन आती है ना, और अगर वो थोड़ा सा पी लो तो फिर जो भी चीजें भूल गई है ना सब याद हो जाती हैं। अच्छा, दिमाग उल्टा चल रहा है, सीधा चलाया करो दिमाग, उल्टा दिमाग चलेगा तो तुम चलोगी आगे, शरीर आपका जाएगा पीछे, तुम खाओगी खाना और दिमाग क्या काम करेगा, गाएगा गाना, है ना। इसलिए उल्टा दिमाग चलाने के लिए दवा मत खाया करो, सीधा दिमाग चलाने के लिए दवा खाया करो। चलो आओ क्वेश्चन पर। सैमुअल बेकेट का एक प्ले है, नाम है वेटिंग फॉर गोडो, एंड वेटिंग फॉर गोडो इज हिज मोस्ट पॉपुलर, most performed and most criticized play है, and waiting for Godot is a play in the category of absurd theater, right? Absurd theater है ये। In Beckett's waiting for Godot, characters often use dislocated, repetitious and clenched speech। जो करेक्टर है वो हमेशा एक ही सेंटेंस रिपीट करते रहते हैं, और थिएटर एब्सर्डिटी में रिपीटिशन ही होता ही है, और वो अननेसेसरी का रिपीटिशन होता है और कोई मीनिंग वहां पर नहीं होती है। उनके डायलॉग्स दे आर नॉट रिलेटेड बट दे आर एब्सर्ड, दे आर नॉनसेंसिकल डायलॉग्स, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डू कैरेक्टर्स स्पीक सच डायलॉग्स, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस। तो प्राइमरी पर्पस जो है वो है टू इलस्ट्रेट द इसेंशियली इलॉजिकल पर्पसलेस नेचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन। यही मिथ ऑफ सिसिफस है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको मिथ ऑफ सिसिफस बताया था कि सिसिफस मिथिकल कैरेक्टर है, एंड ही वाज कर्स्ड टू पुश अ हार्ड स्टोन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, और इवनिंग में इट रोल्स बैक, और फिर सुबह से लेकर शाम तक वो काम करता है। तो ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इज मीनिंगलेस, ह्यूमन लाइफ ही मीनिंगलेस होती है, नॉनसेंस होती है, पर्पसलेस होती है, एंड दैट्स व्हाई वी डू द सेम वर्क एवरी डे। हम सेम काम एवरी डे करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस इज द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, और यही थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। सो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए। They use repetitive, repetitious, dislocated and clenched phrases primarily to illustrate the essentially illogical, purposeless nature of human being. Answer is A. Question number 14 is okay now. Question number 15. Theory of tension. In new criticism, the key term tension is associated with
The term tension is associated with, tension किससे associated है? बोलिए, in new criticism the key term tension is associated with Clint Brooks, John Crorenson, Austin Warren, Alan Tate. थ्योरी ऑफ टेंशन किसकी है? नेहा सिंह, बुशरा, अजय, सुबोध, मौसमी, स्वाति, रजनी, शाबाश। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट। थ्योरी ऑफ टेंशन क्लिंट ब्रुक्स की नहीं है, थ्योरी ऑफ टेंशन जेसी रैंसम की नहीं है, ऑस्टिन वॉरेन की नहीं है, थ्योरी ऑफ टेंशन एलन टेट की है। थ्योरी ऑफ टेंशन एलन टेट की है। राइट आंसर इसका डी है। The woman writer and the 19th century. The woman writer and the 19th century literary imagination. This is the subtitle of a book. Right? The woman writer and the 19th century literary imagination is a subtitle of a book. एक book की ये subtitle है. And the question is, which book has the subtitle The Woman Writer and the 19th Century Literary Imagination? The Second Sex, The Mad Woman in the Attic, The Sexual Politics, Man-Made Language. किसकी subtitle है The Woman Writer and the 19th Century Literary Imagination? This is the subtitle of which book? Right? Which book has the subtitle? किस बुक की ये सबटाइटल है, ये आपको बताना है। शाबाश। सबटाइटल ये है द मैड वुमन इन एटिक की। मैड वुमन इन एटिक इज अ बुक बाय सांद्रा गिलबर्ट। राइट? सांद्रा गिलबर्ट के साथ एक और राइटर है, नाम याद है कि नहीं? सुसन गुबर एंड सांद्रा गिलबर्ट। सुसन गुबर एंड सांद्रा गिलबर्ट की बुक है मैड वुमन इन एटिक। राइट? द वुमन राइटर एंड द 19th century literary imagination. And the title of the book The Mad Woman in the Attic has come from where? It has come from the novel Jane Eyre. And Jane Eyre was written by whom? Jane Eyre was written by whom? By Charlotte Bronte. Right? And Mad Woman in the Attic appears in that very novel. And what is the name of that mad woman?
उस मैड वुमन का नाम होता क्या? इनफैक्ट उसका नाम होता है बार्थमेशन। Barthamation was the name of the mad woman who appears in the novel Jane Eyre, and Sandra Gilbert and Guba Susan. They have, sorry, क्या गड़बड़ हो गया कुछ क्या? चलो जो भी है, राइट। तो उन्होंने वहीं से टाइटल लिया है, एमा से नहीं लिया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं श्रीपति। Zezuri is a poem written by. Zezuri is a poem written by whom? Zezuri is a poem written by Nisi Mejkil, A.K. Ramanujan, Arun Kolatkar और जयंत महापात्रा। जेजुरी एक जगह है, and in fact it is a temple in Maharashtra in Pune district, right? And the story Zezuri is a long poem based on that temple, right? Temple is in very dilapidated condition, right? बहुत worse condition में है, और poem उसी पर एक commentary है, and the poem was written by the Marathi poet Arun Kolatkar, राइट? अरुण कोलातकर की पोएम है जेजुरी। शशि दुबे जी को नमस्ते, राइट? जेजुरी इज द पोएम रिटन बाय अरुण कोलातकर। ऑलराइट, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. If you cannot understand an argument and say that it's Greek to me, it's Greek to me, it means you are unable to understand the dialogue, it's you are unable to understand the quotation, then you are quoting whom? You are quoting whom? It means a poet, a writer has quoted this line, right? Has written this line in one of his works. तो whom are you quoting? किसको आप quote कर रहे हो? If you say that it's Greek to me, are you quoting John Milton? Are you quoting Samuel Johnson or William Shakespeare or John Donne? It's Greek to me. बोलिए जवाब। Question number 18. जी श्रीपति जी, आपको भी नमस्ते। बोलिए आंसर फटाफट। शाबाश, देखिए कितना शानदार जवाब दिया है। वैसे एक बात पूछूं, किस बेसिस पर आप सब लोगों ने तुक्का लगाया है? अपना लॉजिक जरा शेयर करिएगा मुझसे, किस बेसिस पर आप सबने तुक्का लगाया है? क्योंकि आपको कंफर्म आंसर नहीं पता है, और नहीं इसलिए पता है क्योंकि 99% लोगों का आंसर गलत है। 99% लोगों का आंसर गलत है, इसका मतलब कि सभी ने तुक्का ही लगाया है। और किस आधार पर तुक्का लगाया है ये मुझे बता दीजिए बस। किस आधार, क्या लॉजिक लगाते हो तुक्का लगाने के लिए? निश्चित रूप से आप आंख बंद करके नहीं लगाते। हाँ, यूट्यूब पर तो आंख बंद करके ही लगाते हैं, क्योंकि अपने को नहीं आ रहा होता तो देखते हैं कि बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हैं, वही चलो हम भी दे देते हैं।
ऐसा मुझे लगता है, इद्दत मैं कभी यूट्यूब पर क्वेश्चन आयर करता नहीं हूँ। आंसर बदलिए नहीं, ये नहीं कहा कि आप आंसर बदल दीजिए, मैंने ये पूछा है कि किस बेस पर आपने गेस किया है, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू हैव बेस्ड योर आंसर। देखिए मैंने बोल दिया गलत ना, तो ऑप्शन बदलने लगे, और हो सकता है वही वाला सही हो। डू नॉट चेंज योर आंसर, हाँ ये सही रहा। भावना ने कहा मैंने तो आंसर दिया ही नहीं है ना। चलिए, अब सपना भी कह दी है तो मानना ही पड़ेगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन ये नहीं बताओगे कि तुक्का लगाते कैसे हो, समझ ही नहीं पाए, ये भी सही है। देखो जब कुछ समझ में ना आए ना तो शेक्सपियर ही उत्तर लगाया करो, जब कुछ समझ में ना आए तो शेक्सपियर ही आंसर लगाया करो और वही हो जाएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देख करके कुछ समझ में नहीं आया तो आपने सैमुअल जॉनसन लगा दिया, जबकि इसका आंसर विलियम शेक्सपियर है, और ये जूलियस सीजर का डायलॉग है, राइट। जूलियस सीजर के डायलॉग में क्या होता है, एक कॉन्स्पिरेटर, एक कैस्का को कुछ चीजें लैटिन में बताई जाती हैं और फिर वही बोलता है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, राइट। और वही उसका आंसर हो जाता है, विलियम शेक्सपियर इसका आंसर है। व्हेन if you cannot understand an argument and remark it's all Greek to me, it means you are quoting your lovable poet, right। जिसको आप सबसे ज्यादा लव करते हो उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज 19th। Now once again a line is there and you have to find out the poem। अच्छा, शेक्सपियर को समझ में नहीं आता, ये देखिए ये अजय मिश्रा का रिसर्च है। शेक्सपियर पागल आदमी था ना, उसे समझ में नहीं आया तो उसने लिख दिया कि इट्स ऑल ग्रीक टू मी, है ना। वेरी नाइस। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity। These lines are taken from W.B. Yeats's poem, and the name of the poem is which one? Sailing to Byzantium, Among School Children, The Second Coming, A Prayer for My Daughter। कहां से ली गई है ये लाइन? The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity। बताइए पोयम। Turning and turning of the widening Zaire, the falcon cannot hear the falconer, things fall apart। The best lack all conviction while the worst is full of passionate intensity। ये लाइंस कहां की है? ये लाइंस है द सेकेंड कमिंग की, सेकेंड कमिंग की लाइन है। ऑप्शन इज सी हियर। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। True ease in writing comes from art, not chance। True ease in writing comes from art, not chance, as those move easiest who have learned to dance। समझ आई लाइन ना, कि ट्रू इज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट नॉट चांस, as those move easiest who learned to dance। The line means poets are born, poets are made, poets are not made, poets are a product of history। ये बताना है आपको। लाइंस याद है? वेरी गुड।
true is in writing comes from art not chance, as those move easiest who have learned to dance. क्या आंसर है? देखिए शाबाश, दो आंसर है, एक तो बी और एक तो डी। कुछ लोगों के डी है, कुछ लोगों के बी है। चलो देखते हैं। इतनी बात तो कंफर्म है ना कि पोएट्स आर नॉट बॉर्न, बॉर्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इज दैट ट्रू इज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट। आर्ट मीन्स स्किल, स्किल से आता है इजीनेस राइटिंग में। क्योंकि जो डांस सीखे होते हैं ना वो बेहतर मूव कर लेते हैं, वो बेहतर डांस कर लेते हैं। इट मीन्स पोएट्स आर मेड, पोएट्स बनाए जाते हैं, पोएट्स आर मेड। दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। बी इसका करेक्ट आंसर है। जी हितेश जी नमस्ते, नमस्ते विद राइट आंसर। पोएट्स आर बॉर्न, राइट दीज लाइन्स सेज दैट true is in writing comes from art not by chance, as those move easiest who have learned dance. Next question. हाँ, ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है श्रीपति, ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको आंसर बताना था। John Dryden described a major English poet as a rough diamond, and must first be polished before he shines. Identify the writer, identify the poet who is described as rough diamond. Rough diamond क्या होता है? कोयला, कोयले को तराशना पड़ता है ना, कोयले से ही डायमंड बनता है। तो वो कौन सा पोएट है जो रफ डायमंड है इन दी वर्ड्स ऑफ जॉन ड्राइडन? एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड बिफोर ही शाइन्स, एंड दैट रफ डायमंड इज हु? पाश, दैट रफ डायमंड इज जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर वो रफ डायमंड है। And according to John Dryden, Geoffrey Chaucer is father of English poetry. Geoffrey Chaucer is father of English literature. Right? John Dryden का statement है, according to John Dryden, Mr. Geoffrey Chaucer is a rough diamond. Right? Geoffrey Chaucer rough diamond है। Next question. बोलिए आंसर। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल आज शी इज फेयर। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल आज शी इज फेयर। हर brow shades frown although her eyes are sunny. The above lines are characterized by circumlocution, antithesis, anticlimax, bathos. बताइए आंसर। Figure of speech you have to tell here. You have to identify the figure of speech. Where is my love? Part A of the sentence. Alright, where is my love? Part A of the sentence, and part B is cruel as she is fair. A is opposite to B. A is opposite to B. First statement is contradicted by the second statement, and the second one is here, her brow shades frown. This is statement number 1. Brow shades frown, and although her eyes are sunny, this is statement number B, and once again both are contradicting. And where such contradictions are
right, where such contradictions lie, that figure of speech is called antithesis, right? Antithesis, right answer is B. And anticlimax and bathos both are same. And what is circumlocution? Circumlocution is also called periphrasis. And in circumlocution, we do not come to the point directly, but we round and round, घूमते रहते हैं. That is called circumlocution. And the right answer to the question is antithesis. What is thesis? Thesis means idea. Thesis means idea, or antithesis means against the idea. The first statement is against the second statement. This is called antithesis, right? Man proposes, God disposes. This is antithesis. All right, this is antithesis. God made the town, God made the country, man made the town. This is antithesis. And when the ideas are contradicted in a single statement, for example, child is the father of man, child is opposite to man, child means innocence and man means maturity. Single statement में idea contradicted है, they are called paradox. And when two opposite words are put side by side, they call oxymoron, like bittersweet, murderous, innocence, liquid gas, right? ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरन के. ऑलराइट, अरे मैं भी बहुत स्लो हो रही था, बहुत स्लो मैं भी हो गया हूं. अब चलें, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, 23 पर आते हैं. Read and identify. An English architect and a stage designer, beginning 1605, joined Jacobean court to design masks. Jacobean age में करियर शुरुआत करता है. And he was a stage designer, he was an architect, and he worked with Ben Jonson. Ben Jonson used to write masks, and the person who is named here, he was the designer. And you know that masks were highly elaborated plays, right? Highly elaborated plays हुआ करते थे, and contributed significantly to the spectacular theatre which succeeded the Commonwealth after his death. The first designer to use revolving screens to indicate scene changes on the English stage. Identify the artist. Identify करना है आर्टिस्ट को, है ना हुडा? मैं तो स्लो हो ही गया हूं, बिल्कुल. आई एक्सेप्ट, आई कन्फेस, मैं स्लो हो गया हूं. और मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस बचपन से ही सिखाया गया था. बहुत तेज चलने वाले थोड़ी दूर तक चल पाते हैं, और धीरे धीरे चलने वाले बहुत ऊपर तक जाते हैं. इसीलिए मैं स्लो हो गया हूं, और इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप भी स्लो हो जाओ. और उम्र का भी तो तकाजा है ना, धीरे धीरे उम्र के साथ आदमी स्लो हो जाता है. देखिए, बूढ़ा भी तो हो गया हूं अब, तो स्लो हो ही जाऊंगा. चलो आंसर बता दो. जिसका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसका नाम पूछ रहा है, उसका नाम था इनिगो जोन्स. इनिगो जोन्स वाज द नेम. बताओ रिंकी को जवाब हुडा कि हाउ हैव आई बिकम ओल्ड. हाउ कुड यू से कि मैं ओल्ड हो गया हूं. अब तो आपको जवाब भी देना है मेरे बच्चों को. चलिए, इनिगो जोन्स उसका नाम था जो इलेबोरेटर था, जो डिजाइनर था. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Christopher Marlowe was one of the first major writers to affirm what can be identified as a clearly homosexual sensibility. Which drama of his deals with homosexuality? अब ये तो हुडा ही बताएगी. Christopher Marlowe was one of the first major writers to affirm what can be identified as a clearly homosexual sensibility. Which drama of his deals with homosexuality? तारिका का जवाब भी हुडा देगी. Edward II, Jew of Malta, Dr. Faustus, Dido, Queen of Carthage. Right? Edward II जो King Edward II, this play is based on homosexuality. Answer is A here. Right? Literature पे चर्चा आपका भी स्वागत है. Right? A answer is here. All right. Thank you, Bhavna. Christopher Marlowe used homosexual sensibility in his play Edward II. Next question, 25th. When true silence falls, we are still left with echo, but are nearer nakedness. One way of looking at speech is to say that it is constant stratagem to cover nakedness. One way of looking at speech is to say that it is a constant stratagem to cover nakedness. Identify the playwright who underlies the significance of silence thus. Right? Significance of silence पर कौन focus करता है? This is the question. Right? And right answer to the question is Harold Pinter. Harold Pinter is the playwright who believes in silence, and silence speaks louder. Silence speaks louder than words. बचपन से आपने सुना है. Thank you, sir. Your old students learned a lot of things from you. जी लिटरेचर पे चर्चा. What is your name? Are you my old student? Classroom student. Right? Samuel Beckett का आंसर नहीं है ये आंसर है हरोल्ड पिंटर का. These lines are for Harold Pinter. All right. Harold Pinter was a 20th century dramatist and he was the Nobel laureate. Samuel Beckett was also the Nobel laureate and Harold Pinter was also the Nobel laureate. The determining feature of syllabic verse is neither nor but the number of syllables in a line. Fill in the blanks here. Fill in the blank. The determining feature of syllabic verse is neither number nor numbers, but the number of syllables in line, neither sounds nor silences, but the number of syllables in a line, neither stress nor quantity, but the number of syllables in a line, neither gests nor piths, but the number of syllables in a line. Which one is the correct answer? How do you determine syllabic verse? The determining feature of syllabic verse is neither nor. भरिए फिलर भरिए. Your net is working, Rita. That's why message is coming to me. Messages are coming to me. It means your network is very much fine. Right answer is the determining feature of syllabic verse is neither what? Is neither stress
nor quantity, but the number of syllables in a line. कितने syllables हैं उसी पर तो फुट बनाते हो ना. Unstressed followed by stressed, 2 syllables, 1 foot. Unstressed, stress, unstressed, stress, unstressed, stress, 1 2 3. राइट, क्या बन गया ये? ट्राइमीटर. 3 feet is called trimeter, and if they are 4 they are called tetrameter. If they are 5 they are called pentameter. Right? Neither stress nor quantity, but the number of syllables in a line. This is the right answer. C is the correct one. Right? C is the correct one to question number 26. All right? Next question. One question contains many questions. मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले. क्वेश्चंस कुछ कुछ से नए हैं ना, कुछ क्वेश्चंस नए हैं, कुछ क्वेश्चंस MCQs हैं, कुछ क्वेश्चंस PYQs हैं, बट ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. बहुत टफ है ना, बहुत टफ है आज, है ना. बहुत टफ रहने दो. टफ बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो, ताकि हिमालय भी सामने आए ना तो उससे भी टकराने की हिम्मत रखो और उसको भी जीतने की हिम्मत रखो. इसलिए हमेशा मजबूत बनिए, टफ बनिए, टफर बनिए और टफेस्ट बनिए. तब आप जीत पाओगे इस दुनिया को. और दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना होता है. जो खुद को नहीं जीत पाया वो दूसरे को भला क्या जीतेगा. दूसरे को जीतने के लिए, जहां को जीतने के लिए, दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के लिए खुद को मुट्ठी में करना होता है. अपने खुद के लिगामेंट्स पे कंट्रोल पाना होता है. और खुद के लिगामेंट्स पर तभी कंट्रोल पाओगे जब आपका नॉलेज होगा. सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बल पर दुनिया जीती जा सकती है. और अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप किसी को भी चंद्रगुप्त बना सकते हो. चाणक्य तो बनो पहले, वो ज्ञान तो रहे आपके पास. कोई भी चाणक्य, कोई भी चंद्रगुप्त मिल जाएगा, कोई भी चरवाहा मिल जाएगा जिसको आप चंद्रगुप्त बनाने की हैसियत रखोगे. आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ऑलराइट, चलो आते हैं आंसर पर. रसेल्स एक नॉवेल है और दैट इज द ओनली नॉवेल बाय सैमुअल जॉनसन, एंड इट इज सेड दैट सैमुअल जॉनसन रोट द नॉवेल विद इन अ वीक. एक वीक में ही उन्होंने नॉवेल लिख दिया था. राइट, एक वीक में ही उन्होंने नॉवेल लिख दिया था जिसका नाम था रेजल्स. और क्यों लिखा था? बिकॉज ही वॉज शॉर्ट ऑफ फंड फॉर द फ्यूनरल ऑफ हिज मदर. राइट, मदर के फ्यूनरल के लिए पैसे नहीं थे, एंड टू अरेंज द मनी ही रोट द नॉवेल रेजल्स इन अ वीक. राइट, एंड इन दैट नॉवेल देयर इज अ चैप्टर dissertation upon poetry. Dissertation upon poetry is the chapter in the novel Razals. So which one is the right answer here? It is a chapter of his novel Razals. Option B is the correct answer. All right. किस टाइप के क्वेश्चन मैकबेथ से BA थर्ड सेमेस्टर में आएंगे?
हर्षित भाई वही मिलिएगा क्लास में, रूम नंबर 2 में जहां क्लास चलती है, बहुत कुछ वहीं पर बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां का क्वेश्चन वहीं तो बताएंगे ना। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आराम से और आंसर कर दीजिए, बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए, बिना भगे हुए। और ये आपका ही क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, नेट, सेट, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचईसी का असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं पर भी ये क्वेश्चन टपक पड़ सकता है। Humble and rustic life was generally chosen by whom? By William Wordsworth. Because in that condition, the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, or less restraint, and speak a plainer and more emphatic language. The language too of these men has been adopted because such men outwardly communicate with best objects from which the best part of language is originally derived. Which of the following groups of the author's poems in lyrical ballads contradict this statement in the preface to the lyrical ballads as pointed out by Samuel Taylor Coleridge? Right, Samuel Taylor Coleridge ने point out किया है कि these poems contradict the definition given by Wordsworth, and right answer to the question is Michael, Ruth and the brothers. All right, this one is the right answer to question number 28. Which of the following is not a school associated with romantic period in English literature? In during the romantic period, there were several schools of poets like Satanic School of Poetry, Cockney School of Poetry, right? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्कूल नहीं था during the romantic period. Question number 29. Cockney School of Poetry, Leigh Hunt, Hazlitt, John Keats. Flesley School of Poetry, PRB poets, Pre-Raphaelite Brotherhood के poets, they were described as Flesley School, Lake School, Wordsworth, Coleridge and third one Robert Southey. And Satanic School, Lord Byron and P.B. Shelley. Ab which one is not a romantic group? Answer lies here, right? This one, the Flesley School. This school belonged to 1848 to 1860, right? This school belonged to Victorian period. Rest of the three belong to the romantic period. All right, right answer is B for Bombay. Next question. Match the following.
motiveless malignity, reason in madness, stuffed full of horrors, to be or not to be. These lines are regarding or related to these four characters and you have to match the appropriate one. मैच करना है आपको. Motiveless malignity, the phrase was coined by Coleridge. The phrase was coined by Coleridge for the Shakespearean villain Iago. Right? Means A stands for fourth. A stands for fourth. Right? Means option A and option D have been eliminated. Two are left. To be or not to be belonged to Hamlet. This is the simplest one. It means option D is with second. Option D is with second. Option A, option B, option D eliminated. This one is the clear cut answer. This one is the right answer to the question. Clear? बाकी दो के कुछ करने नहीं है. रीजन इन मैडनेस ये किसका है? तो अब आप यहां पे देख लीजिए बी के साथ कौन है. बी के साथ किंग लियर है. पागल तो वही है. और एक बचा सॉफ्ट फुल ऑफ हॉरर. और ये कौन है? ये है मैकबेथ. ए है. ये आप मिला लीजिए. हो सकता है आप टीजीटी का पेपर दो, आप पीजीटी का पेपर दो, तो इनमें से एक ही एक आ जाए, चारों इकट्ठा ना आए. बट ये यूजीसी का पीवाईक्यू है. और यूजीसी तो आप जानते ही हो कि पूरे शेक्सपियर को एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है और उसी का ये एग्जाम्पल है. राइट? इंटायर ऑल द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, दे आर compressed in a single question. This is NTA-NET or UGCNET. All right. And in TGT and PGT, these four options will create four questions. (31st) The famous sonnet of John Milton beginning "When I consider how my light is spent" ends with the last line of the sonnet on his blindness. Last line of the sonnet on his blindness is: "Before me stares a wolfish eye, behind me creeps a groan or shy. They also serve who only stand and wait, and which is more, you will be a man, my son, and bless him for the sake of him that is gone." Very simple question. Very, very simple question. This name of the sonnet is "When I consider how my light is spent," and it was again retitled, जिसको आप कहते हो, right, by someone on his blindness. And the last line of the sonnet is, सबको बताना है इसका आंसर. जितने भी लोग जुड़े हैं सारे लोगों को आंसर बताना है. शशि, बुशरा, भावना, सपना, सोनू, श्रुतिका, right? Everyone has to answer the question. Those who stand and wait, they also serve who only stand and wait. जो सिर्फ स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, वो भी गॉड की ही सेवा कर रहे होते हैं. This is the last line of the sonnet, "When I consider how my light is spent," and this is a Petrarchan sonnet written by John Milton after his blindness. All right. Question number 32nd.
In which of the following does Robert Sade detail the Indian superstitions as an idolatry to be suppressed by a civilizing Protestant form of colonialism? Mr. Robert Sade wrote many Oriental poems. Lord Byron wrote many Oriental poems. Robert Sade was the poet laureate of England, and during his tenure, right, the colonial power was on its peak. Right here in India, they were ruling, right, ruling unki thi, and they were criticizing India's idolatry, India's worshipping. And in which poem does Robert Sade satirize or criticize India's superstition? और अजय मिश्रा ने देखो आंसर दे दिया है, बट सही नहीं है, और वो पोएम है द कर्स ऑफ हिमा. This is the answer to the question. All right, question number 33rd. Once again, you have to match. You have to match the characters, right? And these are the novels by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence की नॉवेल है सारी की सारी, Sons and Lovers, Kangaroo, Women in Love, and The Rainbow. And these are the characters: Rupert Barkin, Lydia Linsky, Miriam Levers, and Richard Somers. 4 novels and 4 characters. Right? You have to match the character with their novels where they appear. And this question is your assignment. This question is your homework. Right? This question is your homework. After your live class is over, you will search the names of the characters and the names of the novels, and you will be writing your answer in your comment box. यद्यपि आप बहुत कम लोग लिखते हो आंसर, बट कोई नहीं, लिखिएगा. जितने भी लोग पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे ना, तो पढ़िएगा, ढूंढिएगा, एंड आंसर वहां पर जाकर कमेंट बॉक्स में करिएगा. यहाँ पे तुक्का बिल्कुल नहीं लगाइए. ये आपके लिए टफ हो सकता है नेहा, because these questions are not only for UP, TGT, PGT, but today I have included questions for EMRS, for DSSSB, TGT, PGT, and for SET and NET examinations as well, right? I have included questions for all these examinations, and if you are particularly preparing for UP, TGT, PGT, then all the questions are not important for you. But if you are preparing for some more examinations, then these questions will definitely help you. All right, चलो next question पर आते हैं. This is your assignment. You have to do it. At the end of Sons and Lovers, Paul Morale. सबने Sons and Lovers पढ़ा होगा ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, सबने पढ़ा है. बताइए आंसर. पॉल मोराल का अंत में क्या होता है? Paul Morale was the original title of the novel Sons and Lovers, and it is a novel based on Oedipus complex theory. Paul Morale and William Morale were 2 brothers, and they were loved by their mother Gertrude, right? And once William Morale dies, Paul Morale was loved by his mother solely, and because of the love, he could not marry anyone, right? And the question is, at the end of the novel, the mother dies, and then what happens to Paul Morale? Paul Morale
sets off in a quest of life away from his mother. अपने मदर से दूर चला जाता है in search of life. This is the right answer. Right, this is the right answer. 34th का answer A है. All right, and now question number 35th. In Women in Love, what is Winifred's Pekingese dog called? एक डॉग है, उस डॉग का नाम पूछा है. विमेन इन लव भी D.H. लॉरेंस की नावल है एंड विमेन इन लव इज सेड टू बी द सिस्टर नावल ऑफ द रेनबो. रेनबो की सिस्टर नावल है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग? डॉग का नाम पूछा है. बिस्मार्क, लुलू, लकी और बडी. बताइए, गेस कर लीजिए नाम. गेस करना है. गेस कर लीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग. The name of the dog is Lulu. Lulu is a mall in Lucknow. Right? लखनऊ में एक मॉल भी है और यही नाम है उसके डॉग का. राइट, डॉग भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए. जैसे बेलिंडा के डॉग का नाम क्या था? बेलिंडा द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन है ना. शी आल्सो हैड अ डॉग एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हर डॉग? इस पर भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है. Right answer here to the question number 35 is what? Lulu. All right. चले. Thank you. चलिए. Thank you. Then thank you. Question number 35 over and your time भी over हो चुका है. So thank you for watching the new Lyceum. And if you have watched properly, if you have answered properly, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, अगर आपको क्लास पसंद आई होगी, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल. इट इज योर चैनल एंड spread your channel among other students so that they could also get the benefit of the class. Thank you so much for being with me. Thank you so much for joining the class. We will meet tomorrow with a few more questions, new talk, new dialogue. All the best. Good luck everyone. Bye bye. Take care. Jai Hind. Jai Bharat.